Hello dear student, this is Deep Narayan Singh. In this video lecture, we are going to discuss questions which have been asked in your CBSE board exam from the unit 1 of your subjective part in the subject Artificial Intelligence. So that unit name is Introduction to AI. So what are the subjective questions are being asked from there that we are going to see in this video. Definitely you will get 2-3 questions from there in your final board exam. So watch it very carefully, and wherever you do feel difficulty, please do write in the comment section. If you like the video, please do subscribe this channel if it is helping in your studies. So let us go to the question. This is our first question, and it says, what is artificial intelligence? Okay, so what is artificial intelligence? Very first question that comes in our mind while we study this subject. Let us see the definition first. When a machine possesses the ability to mimic the human traits. Now, important traits. What are the human traits? Or copy human behavior, make decisions, predict the future, learn and improve on its own. Then we call that machine is a artificially intelligence. My pen is not working properly, I think. Let me readjust it. Okay, fine. I hope it will work fine now. Let me erase the ink of the slide completely. So we will again read, when a machine possesses the ability to mimic human traits or copy human behavior or make decisions, predict the future, learn and improve by its own, then we will say this machine is intelligent. अगर हिंदी तर्जुमा इसका देखें तो जब मशीन मनुष्य जैसे गुणों का, ट्रेट्स मतलब गुणों का, ह्यूमन ट्रेट्स, कॉपी ह्यूमन बिहेवियर, मनुष्य जैसे गुणों का प्रदर्शन करने लगे या मनुष्य जैसा व्यवहार करने लगे, और वो सक्षम हो जाए डिसीजन, निर्णय लेने में या भविष्य के बारे में अनुमान लगाने में, प्रिडिक्ट द फ्यूचर, एंड लर्न एंड इम्प्रूव ऑन इट्स ओन, और अपने आप खुद से सीखने की क्षमता अगर किसी मशीन के अंदर डेवलप हो जाती है बेटा, तो हम उसको क्या कहते हैं? वी कॉल दैट मशीन इट इज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट. इसका मतलब है ये कृत्रिम रूप से बुद्धिमत्ता हासिल की गई मशीन है. नेचुरल इंटेलिजेंस इज इन द ह्यूमन बीइंग्स, दे आर नेचुरली इंटेलिजेंट, मीन्स प्राकृतिक रूप से उनके अंदर रीजन करने का, लॉजिक का, मेमोरी का गुण होता है. बट मशीन्स में ऐसा नहीं होता प्राकृतिक रूप से. तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से उनको इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, मशीन्स आर इंटेलिजेंट आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से हम उन्हें बुद्धिमत्ता प्रदान करेंगे बाय कलेक्टिंग डेटा, जानकारी को इकट्ठा करके, अंडरस्टैंडिंग इज, उसे समझ के, एनालाइजिंग इट, और उसको एनालाइज करके, प्रोसेस करके, लर्न फ्रॉम इट, और इससे सीखेंगे एनालिसिस से, एंड इम्प्रूव इट. तो जब कोई मशीन अपने आप से डेटा को कलेक्ट करे, अंडरस्टैंड करे, एनालाइज करे और उससे सीखे, ऐसी मशीन को हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट. So this definition is quite good if you remember it, because there is a high chance you will get one of the question around it. Let us go for the next question. Define artificial intelligence. List 3 domains of AI and what and the data that is used in these 3 domains. So we all know there are 3 domains of the AI. Let us see the question. First question is same. Define artificial intelligence, or what is artificial intelligence. So in slightly different words, the answer has been given in this question. Artificial intelligence refers to any method, ऐसा कोई भी तरीका, that makes it possible for a computer, जो कंप्यूटर को ये संभव बनाता है, to simulate intelligence, जो ऐसा आभास करा सके कि कंप्यूटर क्या है? इंटेलिजेंट है, बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है. और मशीन्स कैन नाउ डिटेक्ट ह्यूमन फेस. आप देखते हैं कि जब भी आप फोटो निकालते हैं तो उसमें स्क्वायर बन के आ जाता है जहाँ पर ह्यूमन फेस होता है. सो that is what image processing. Your mobile phone is capable to recognize where the human face is, move and manipulate items, comprehend human voice commands like Alexa, Siri में आप देखो कि आप वॉइस कमांड दे सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज,
अभी हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियोस में कि नेचुरल लैंग्वेज क्या है, ह्यूमंस जिसमें आपस में बात करते हैं हम उसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज, एंड दैट सेम लैंग्वेज कैन बी यूज टू टॉक टू द मशीन्स ऑल्सो नाउ. So that whole study we will do in natural language processing and perform variety of other jobs, और दूसरे कई सारे काम करते हैं थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी. ये सब संभव हो पाया है इसी तकनीक की मदद से. द AI enabled machines operate in an intelligent manner and think algorithmically. जो AI enabled मशीन है, जो AI कैपेबल मशीन्स हैं, वो इंटेलिजेंट मैनर में ऑपरेट होती हैं. ठीक है, दे आर नॉट जस्ट डूइंग द टास्क यू सेड देम टू डू, दे ऑल्सो मेक स्लाइट करेक्शन as per the knowledge they are gaining through data, or analyzing that data, understanding it and learning from it. I hope you people are getting what I am trying to explain. Let us see the domains. So there are three domains. First one is like data science. So what type of input it takes? It takes input in the form of numeric and alphanumeric data. So when you want data mining on big data, that are all fields of data science. Then you have computer vision here. Takes input in the form of images and videos. तो इमेजेस और वीडियोस का जहां पर जिक्र हो वो किस डोमेन का पार्ट होगा? कंप्यूटर विजन डोमेन का पार्ट होगा. नेक्स्ट आपके पास है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. टेक्स द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और स्पीच. So either you can give input in the form of text, or you can give input in the form of speech. Most common feature of this natural language processing you will find now everybody, those who do not know anything about AI or natural language processing, also using that voice typing, and they will say hold the microphone button in the WhatsApp and just say something, and that will be type exactly what they are saying with correction. Even though the people is not pronouncing the word correctly, still that program, AI enabled program that is inside the WhatsApp, is able to recognize what word is being said, also suggest the correction in the grammar. So that is all possible due to artificially intelligent algorithms or softwares only, or through this technology only. AI is the umbrella term for data science, computer vision, and natural language processing. They all comes under this artificial intelligence topic. Let us go for the next question. Samarth attended a seminar on artificial intelligence, has now been asked to write a report on his learnings from the seminar. Being a non-technical person, he understood that AI-enabled machine uses data different format in many of the daily basis application, but failed to sync it with the right terminologies and express the details. Help Samath to define artificial intelligence, list three domains of AI, and the data that is used for these domains. The same question is being asked here also. These type of question are called case based questions. So you have to analyze the question and understand what it is asking. Like in previous question, it is very easy to understand. Define artificial intelligence and list the three domains of AI and the data they are used in these domains. But the same question is being asked here, but in slightly different manner. But the answer will be same. We have used some different word to answer to give you a greater understanding about this type of question. Artificial intelligence refers to any technique that enables computer to mimic human intelligence. Any machine that mimic the human intelligence is called artificially intelligent machine. Make decisions, predict the future, learn and improve by its own. Remember this definition, read it 2-3 times if you are not able to get it. Otherwise it's very simple. If you listen to 1 or 2 times, definitely you will be able to remember. So what is artificial intelligence? AI refers to the technique that enables computer to mimic human intelligence, make decisions, predict the future, learn and improve on its own. So such type of machines are called what? Artificially intelligent. With respect to the type of data fed in AI model, the AI model can be broadly categorized into three domains. So what are those three domains? We all know: data science, computer vision, and natural language processing. And what type of input they take? There is no change.
means data science will always take the input in the form of numeric and alphanumeric data only. Computer vision will take the input in the form of images and videos only, and natural language processing will take the input in the form of text and speech. So these are the input which has been given to these domain model AI models. So when AI model is what? It is a algorithm which is based on some of the AI technology, and that is able to do what? Make decisions, predict the future, learn and improve by its own. Okay, and these models run on computer. So when I say machine, you don't understand it is a machine somewhere in the factory, or like lathe machine or any machine, wood cutting machine. This is the machine we are talking about, a computer only. Okay, in abstract form. Let us go to the next slide. What do you mean by machine learning? Again, I hope pen is disturbing. No. What do you mean by machine learning? So this is a new term for you. If you have studied it well, definitely you will know what do you mean by machine learning. Machine learning refers to a branch or division or a subset of artificial intelligence that requires data and a trained algorithm model. It learns by the data provided and improve the performance or the processes. It applies to the labeled or unlabeled data and make a prediction. तो भाई मशीन लर्निंग क्या है? एक तो एक ब्रांच है किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. ये किस पे काम करता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करता है, और वो डेटा को हैंडल करने के लिए हम क्या बनाते हैं? एक मॉडल, एक एल्गोरिदम लिखते हैं, और दैट एल्गोरिदम इज like it's self learning, means it can learn by its own based on the data you are feeding to that algorithm or that AI model. So and after it learns and adjust the performance and process for better one. Okay, and data can be of two type, labeled or unlabeled. So when you know the category of data, that is called labeled data. When you don't know anything about data, that is called unlabeled data. So labeled data can be used in the classification, unlabeled data can be used in clustering. AI project cycle, if time permits, I will make one video on learning algorithms also, or learning domains like supervised, unsupervised, or semi-supervised learning. But with this lecture, we come to the end of subjective questions for because we have created subjective question video for all the units. Let us go for the next question. What is deep learning? Very important. Many a times asked the topic, what is deep learning? So some software can use it to teach itself how to carry out task using enormous volume of data. डीप लर्निंग में क्या है? जो साइज ऑफ द डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. तो size of the data is very much in deep learning, and massive volume of data are used to train the machine in deep learning, allowing it to learn from data. और इससे क्या होता है? हमारा जो मॉडल है या जो एल्गोरिदम है, इट बिकम सो sophisticated, it improves the accuracy to a very high degree. These devices possesses the intelligence to create an algorithm on their own. तो इतना ज़्यादा ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड कर देते हैं कि वो अपने आप का एक एल्गोरिदम बना लेते हैं अंदर, उसमें एडजस्टमेंट करके, so that they will give the very high accuracy in the output. Most sophisticated type of artificial intelligence among these three is deep learning. This is the best in all type of AI. The next stage is immediately intelligent machine learning, and artificial intelligence encompasses all the idea and technique that in some way or another approximate the human intelligence. इसके बाद your artificial intelligence machine somewhat reaches to the human intelligence. So deep learning is the मोस्ट सफिस्टिकेटेड और मोस्ट एडवांस्ड वन. सफिस्टिकेटेड को अगर आप दूसरे शब्द में कहना चाहें तो क्या बोलेंगे? मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड लीस्ट एडवांस को क्या कहते हैं? नैरो एआई कहते हैं. लीस्ट एडवांस को कहते हैं नैरो एआई. डीप लर्निंग इज द means most advanced. Nowadays you can also have a deep fake algorithm, okay, so that are very realistic in nature while giving the output. Let us go for the next question. How deep learning, I want to give one example here. Sometime you have seen our
Mahatma Gandhi just making different gesture on a note in an image or GIF image, or Barack Obama or any world leader is giving a amusing speech which might not be delivered by that person. So how it is being possible? Due to the deep fake. One of the branches there, that is called deep fake. Also have an idea about chat GPT, because I have a gut feeling that they might ask something about it uh, if a paper has not been printed till that is in news. तो चैट जीपीटी क्या है? एक लर्निंग मॉडल ही है, और you just go through about it to prepare 2-3 line answer for it. What is chat gpt like? Okay. Let us go for the next question. How do you understand whether a machine or application is AI based or not? Explain with the help of example. Let us see the answer. Any machine that has been trained with data and can make decisions, prediction on its own can be termed as AI. ऐसी कोई भी मशीन जिसको डेटा के साथ हम ट्रेन कर सकते हैं, वो अपने डिसीजन ले सकती है और कुछ संभावनाएं प्रिडिक्शन व्यक्त कर सकती है फ्यूचर के लिए बाय इट ओन, अपने द्वारा ही। तो ऐसी ये मशीन को हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस मशीन कहेंगे। अ बॉट और ऑटोमेशन मशीन इज नॉट ट्रेन्ड विद एनी डेटा इज नॉट एन एआई, while a chatbot that understand and process the human language is an AI. ऐसा कोई बॉट है अगर जिसको अगर डेटा के साथ कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, दैट इज नॉट एन एआई। बट अगर कोई स्मार्ट बॉट है या चैट बॉट है दैट कैन अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज, a question written in any form can be understood by that chatbot, and it can also be able to generate the answer for that, then it is called what? AI enabled chatbot. If you do an image search for a vacation on a popular search engine, the first few searches mostly returns the pictures of beaches. That is what is the concern here? That is called the bias. AI bias, very important question, famously asked 2-3 times. AI bias. So machine by inherently it does not have any bias. पूर्वाग्रह मशीन का अपना कुछ नहीं होता, but while a person develops algorithm for that machine, and that algorithm unknowingly or knowingly, the inherent prejudices or biases which are inside the human thinking all also pass on to the machine algorithm, and that may result in such type of situation. Like if you search cert, SHIRT, okay, on Google, you will find most of the search or models are showing men, but searches are bore by men and women both. So that is another example of AI bias. I have seen one more example like chef. Okay, chef, if you search or cook or chef, then what will happen? You will find most of the images of women, but chef is a neutral gender profession, anyone can do anything. So like but it has been the search algorithm has been designed like that. It is going to give you most of the pictures of the woman while you type chef, because that is the profession we see it to associated with the woman only. So these all are examples of AI biases, and definitely they are going to ask this question in one way or other. So please do understand it properly. In the given scenario, we are concerned about the bias. When we talk about a machine, we know that it is artificial and cannot think of its own. जब भी हम किसी मशीन के बारे में बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि एक आर्टिफिशियल है और ये अपने आप से नहीं सोच सकती है. इट कैन हैव इंटेलिजेंस बट कैन नॉट एक्सपेक्ट अ मशीन टू हैव एनी बायसेस ऑफ इट्स ओन. इसको हम इंटेलिजेंट बना सकते हैं, लेकिन अभी इंटेलिजेंस का वो स्तर नहीं पहुंचा है जब इसके पास अपने खुद के बायसेस हों, पूर्वाग्रह हों, प्रेजुडिसेस हों अबाउट एनीथिंग. Any bias can be transferred from a developer to machine while algorithm is being developed. एक स्पेशल केस भी डिस्कस हुआ था कि एक कोई एआई बेस्ड एंट्रेंस सिस्टम बनाया गया किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसमें रेसिज्म का जो बायस था किसी के अंदर, inherently they have put such a condition in it that it gives the supremacy to the fair skinned people. So like that it discriminates about the people, those who
are dark skinned or belong to a particular region like Africa or some other part of the world. So that type of situation may come. Define the term machine learning and also give two application of machine learning. We have seen the example for machine learning or answer for machine learning previously also. It is a subset of artificial intelligence and it enables machine to improve its task with experience, that is data. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है और ये मशीन को डेटा से सीखने में मदद करता है. द इंटेंशन ऑफ द मशीन लर्निंग इज टू इनेबल मशीन टू लर्न बाय देमसेल्फ. इसका इंटेंशन क्या है? मशीन्स को इस लायक बनाना कि वो अपने आप से सीख सकें द प्रोवाइडेड डेटा एंड मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शंस एंड डिसीजंस, और उसके हिसाब से सीखकर ज़्यादा से ज़्यादा सही संभावित निर्णय ले सकें और संभावनाएं व्यक्त कर सकें भविष्य के लिए. द मशीन लर्निंग इज यूज्ड इन स्नैपचैट फिल्टर्स. आप देख रहे हैं स्नैपचैट में कई सारे फिल्टर आते हैं. एज का फिल्टर आता है और स्पेक्स लगाने का फिल्टर आता है. कई सारे फिल्टर आते हैं. आप अपना कार्टून क्रिएट कर सकते हैं. नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम्स के अंदर भी मशीन लर्निंग का यूज होता है कि कौन सी मूवीज़ या कौन सा वेब सीरीज़ यू वांट टू प्रेफर, तो वो आपको यहाँ नीचे शो करेंगे सर्च रिजल्ट में. लाइक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर प्रोडक्ट को रेकमेंड करने में इसका यूज़ होता है मशीन लर्निंग का. Let us go to see the next question. Explain 3 domains of AI. Again, very important question. Definitely they are going to ask in 1 mark or fill in the blank somewhere the definitions of these domains. Like, what is computer vision? Refers to the training of computers to have a vision somewhat like humans, so that machine can accurately identify and classify object and produce the specific reaction. Computer vision में हमें computers को ट्रेन करना है. जैसे कि मनुष्य के पास आंखें होती हैं देखने के लिए, उसी तरीके से कैमरे के थ्रू कंप्यूटर उसको चीज़ों को देख सके और उनके हिसाब से रिएक्ट कर सके, उनको क्लासिफाई कर सके. नेक्स्ट जो है वो है डेटा साइंस. डेटा साइंस इज अ फील्ड दैट uses scientific method, process, algorithm, systems to extract knowledge and insight from many structured or unstructured data to apply in AI applications. डेटा साइंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आजकल ह्यूज डेटा डेवलप हो रहा है. आप देखो तो डेटा की माइनिंग हो रही है ना. आप अज्यूम करो कि एक दिन में जिस माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, कितना सारा वीडियोस को अपलोड किया जाता होगा और फेसबुक पर कितने फ़ोटोज़ अपलोड किए जाते होंगे. ये सारे डेटा को मैनेज करना और इसमें से कुछ इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन निकालना, ये सब किसका काम है? डेटा साइंस इज रिलेटेड टू data mining. It a big branch of data analytics. Okay. And machine learning and big data. So when data size becomes in petabyte, hexabyte or zettabyte, okay, yottabyte, in that and that is not a thing of future. Presently it is happening, like in Facebook centers or YouTube centers or Amazon shopping website center. There is a huge amount of data is available. तो उसके साथ काम करने के लिए नॉर्मल एल्गोरिदम नहीं काम करती. उसके लिए हमें आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एनेबल्ड एल्गोरिदम का यूज़ करना पड़ता है. तो दिस इज अ डेटा साइंस. नेक्स्ट वी गो फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. इज अ सब फील्ड ऑफ AI मेनली कंसर्न विद द interaction between computers and human language in the form of speech or natural language input, speech natural language output. स्पीच के फॉर्म में ही इनपुट और स्पीच के फॉर्म में ही आउटपुट. सो फॉर दैट पर्पज हमें कौन सा डोमेन पढ़ना पड़ता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैटेगराइज द फॉलोइंग अंडर द डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन NLP. इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है. दे विल गिव सम टेक्स्ट और उसमें से बताना है हमको कि जो टर्म यूज हुए हैं वो किस पर्टिकुलर डोमेन को बिलोंग करते हैं. The latest technological example have made our lives convenient. I hope we have covered this question in NLP video also, but let us see it here also. Face lock, facial recognition, face app, they all are computer vision. Price comparison website are data science because they are dealing with the data. Chatbot Alexa Siri is an example of NLP, natural language processing, and Snapchat filters are from machine learning. Let us go for the next question. Explain any 4 abilities that are involved in intelligence. Again, this is a 4 mark question and
such type of questions are being asked in your in long answer type. You have to remember this. There you have different type of intelligence, like mathematical and logical intelligence. It is an intelligence which helps a person to regulate, measure and understand numerical symbols, abstraction and logic. अगर कोई न्यूमेरिकल सिंबल्स को बच्चा अच्छे से समझ रहा है, व्यक्ति अच्छे से समझ रहा है, एब्स्ट्रैक्शन को ठीक से समझ पा रहा है ना, लॉजिक को सही से समझ पा रहा है, तो उसको बोलते हैं कि उसके पास क्या है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है. जैसे रामानुजम के पास थी, दे सी अ नंबर एंड they can just find out the patterns in those numbers. Linguistic intelligence, language processing skills both in terms of understanding or implementing. कई लोग होते हैं जो बहुत सारी 10-10 लैंग्वेज जानते हैं, तो उनको क्या होता है, भाषा की समझ और उसे सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोगों के पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है. Spatial or visual intelligence, it is defined as the ability to perceive the visual world and a relationship of one object to another. एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ इस स्पाशियल वर्ल्ड में क्या रिलेशन है उसको समझता है, जो उसे स्पाशियल विजुअल इंटेलिजेंस कहते हैं. काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी दैट इज रिलेटेड टू हाउ पर्सन यूजेस लिम्स. ओके, तो बॉडीली मूवमेंट जो है उनके कितने बेहतर हैं और कितना कंट्रोल है, उसको एथलेटिक्स में जो आप देखते हैं वो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है. व्हाट आई सजेस्ट हियर, in each category of intelligence you try to think of a profession which should require that particular intelligence, then you will never forget it. Like kinesthetic intelligence में आप देखो एथलीट्स को रख लो, है ना. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आप ट्रांसलेटर्स को रख सकते हो, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में मैथमेटिशियंस को रख सकते हो, है ना. इसमें स्पाशियल इंटेलिजेंस में एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स को आप रख सकते हो. Then you have musical intelligence. The musician can be there, those who understand the notes and the rhythms and tones and patterns in the sound. They will be under the musical intelligence. Then you have something called interpersonal intelligence. It is defined as the ability to realize weakness, strength and his own feeling. अपने बारे में समझना, intra, within. The word intra means inside. Okay, so when you are able to understand yourself, है ना, the ability to realize weakness, strength of its own feeling, उसको बोलते हैं intrapersonal intelligence. Then you have existential intelligence. तो जो लोग होते हैं वो जैसे रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इनके पास एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है. दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस लाइक हु एम आई, मैं कौन हूँ, मनुष्य का इस पृथ्वी पर जन्म किस लिए हुआ है. तो जो बाबा टाइप के लोग होते हैं वो सब उनके पास क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में वो सोचते रहते हैं. Then you have naturalistic intelligence. This intelligence is related to the ability to process the information around us. आपके वातावरण में, आपके इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं, घट रही हैं, उनके बारे में जानकारी रखना, अवेयर रहना, अलर्ट रहने वाले व्यक्ति को क्या होती है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है. Interpersonal intelligence. The intelligence is the ability to communicate with others, understand others, people feeling and influence the person. तो जो सोशल होते हैं बहुत ज़्यादा लोग, जैसे लीडर्स हो गए जो मास को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके पास क्या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है. तो ये 9 के 9 आपको याद रखने हैं, 4-5 वो पूछ सकते हैं 4 नंबर में, और इनके बारे में एक एक उदाहरण और उनकी सही डेफिनेशन आपको याद रखनी है. द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन अनदर वे ऑल्सो. Like Swat is emerged to learn about his sister Ananya, who is multi-talented and has excelled in academic, okay, music, dancing, sport and painting. He was quite curious when Ananya told him that he too passed all three intelligence like every human being does, but only at different levels. He wondered which intelligence she was talking about. Can you help him, Aswat, to learn about the different type of intelligence by naming them and explaining any 4 of the intelligence? The answer will be same, and just to show you the question can be framed in different way, I have written this question here. The same answer, all 9 you need to remember and you need to write in that case. At last, this is our golden statement: rise, awake, and stop not until the goal is reached, said by Swami Vivekananda. Thank you very much for patient listening, and please do like, share and subscribe this channel if it is helping in your studies. Do share with your friends and to whom you think it is worthwhile to see.
Okay, so have a nice day. That's it in this video. Thank you very much.